Hello everyone. In this video we will study about the case 3 of the topic adjustment in closed accounts. That is, when errors other than partners are also given in the question. For example, errors related to manager's commission, creation of reserve. If this type of error will also given in a question, then how we will solve the question? We can understand this with the help of a question given as question number 51 in the new edition and question number 49 in the old edition. In this question, there are three partners A, B and C. Their profit sharing ratio is 2:1. During the year, firm earned a profit of rupees 2,20,000, which was distributed among the partners without considering the following. And these are the errors given in the question. Salary to B 5,000 per month, to C 10,000 per quarter. Interest on capitals at the rate 6% per annum. Commission to manager at the rate 10% after charging such commission. और पार्टनर्स के आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है. ए रुपीज 4 लाख, बी रुपीज 2,50,000 एंड सी रुपीज 1 लाख. नाउ इफ यू आर ऑब्जर्विंग इन दीज एरर्स, देयर इज ए पर्टिकुलर एरर गिवन विच इज नॉट रिलेटेड टू पार्टनर, दैट इज द मैनेजर्स कमीशन. अब अगर हमें क्वेश्चन में एक ऐसी एरर गिवन होती है जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम किस तरह से क्वेश्चन मेंटेन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जब आप इसमें एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, यू विल मेंटेन अ सेपरेट कॉलम फॉर द एरर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड नॉट रिलेटेड टू पार्टनर. ये आपको मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड एरर गिवन है जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है. तो एडजस्टमेंट टेबल मेंटेन करते समय इस तरह की एरर के लिए आपको एक सेपरेट कॉलम मेंटेन करना है. जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, हमने मेंटेन किया है इन द एडजस्टमेंट टेबल पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स नेम, and this particular column is for the error which is not related to partner, that is manager's commission, and last column is same as before, total of the firm. Now because more than one error are given in the question, that's why first of all we will point out the errors one by one. The first error given in the question is salary, which is given to B and C as per the deed, that's why salary, and it is credited in the partner's capital account, that's why credit. B's salary is 5,000 per month, that means 60,000 rupees annually. C's salary is 10,000 per quarter, that means 10,000 multiplied by 4, because there are 4 quarters in a year, 40,000 rupees annually, and the total salary from the point of view of the firm is rupees 1 lakh. Second one is interest on capitals at the rate 6% per annum. The interest on capital, which is also credited in the partner's capital account, that's why credit. 6% of 4 lakh 24,000, 6% of 2 lakh 50,000 15,000 rupees, and 6% of 1 lakh rupees 6,000. From firm point of view, total interest on capital is 45,000. Now the third one is manager's commission. It is given 10% after charging such commission. Here 10% means 10% on net profit if it is not clear given the question. और आपको ये आफ्टर चार्जिंग बोला गया है, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला रेट ओवर 100 प्लस रेट. दैट्स वाई गिवन नेट प्रॉफिट्स 2,20,000 into rate over 100 plus rate, that means 10 over 110, it will be rupees 20,000 in manager's commission column. Because it is a liability for the firm, that's why it will be credited from the firm's point of view 20,000, and total amount is 20,000. Now because these all are the credit amounts, that's why we will add these amounts and we will get the statement amount which is to be credited 24,000, 60 plus 15 75,000, 40 plus 6 46,000, 20,000, and from firm point of view 1,65,000.
अब हमें मालूम है कि सेकंड स्टेटमेंट के लिए जो इस केस में होगी अमाउंट विच इज टू बी डेबिटेड, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट के टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है इधर इन द गिवन स्पेसिफिक रेशियो अदरवाइज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में अदर देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई भी स्पेसिफिक रेशियो गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल डिस्ट्रीब्यूट 1,65,000 in the given profit sharing ratio, that is 2:2:1. The amount will be 66,000, 66,000 and 33,000 rupees. Now we will compare these two amounts and find out the differences without considering plus and minus sign as we are doing before in the same type of question. 24 and 66, difference is 42,000. 75 and 66,000, difference is 9,000. 46,000 and 33,000, difference is 13,000. 20,000 and 0, 20,000. 165 and 165, this is the nil. Now check which one is the bigger amount. 24,000 and 66,000. 66,000 is the bigger and it is debited, that's why debit. 75 and 66. 75 is the bigger amount, it is credit, that's why credit. 46 and 33, 46 is the bigger amount, credited, that's why credit. 20,000 and 0, 20,000 is the bigger amount, credited, that's why credit. Finally, we will pass the journal entry, and in journal entry, because fixed capital account balances are given, that's why entry will be given by the name of current account, and the entry will be A's current account debit rupees 42,000 to B's current account 9,000 rupees, to C's current account 13,000 rupees, and to outstanding manager's commission, that is rupees 20,000. So this way, if any error is given which is not related to partner, for the rectification of that error you will maintain a separate column in the adjustment table. This way you can easily sort out the question and easily understand the solution. Now the second way for the topic adjustment in closed accounts, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हमने बात की थी कि देयर आर टू वेज फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द सेम, एंड दीज आर नंबर 1 bypassing an adjustment entry, and second one is bypassing adjustment entries in place of a single journal entry. That's why now the adjustment in closed accounts, bypassing adjustment entries in place of a single journal entry. आपकी बुक में केवल एक सिंगल क्वेश्चन गिवन है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन का. वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द सेम क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 68 in the new edition or question number 66 in the old edition. In this question, P, Q and R are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their capital account balances are given. These are rupees 2 lakh, 1,50,000 and 1 lakh respectively. After necessary adjustments in respect of drawings and net profits. ये जो आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है इसके साथ ही मेंशन किया हुआ है दीज आर द बैलेंसेस आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट्स. और हमें इस बात की नॉलेज है कि नेट प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन होती है एट द एंड ऑफ द ईयर. अगर हम नेट प्रॉफिट्स की ट्रीटमेंट दिखा चुके हैं गिवन बैलेंसेस में, दैट मींस द गिवन बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स आर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये वर्डिंग गिवन होगी आपको कैपिटल के साथ, इट विल शोज दैट द बैलेंस गिवन बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इन द क्वेश्चन. नाउ ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000. आपको एक एरर गिवन है, एरर ऑफ कमीशन. Before the distribution of profit, firm will not taken into consideration the interest on capital at the rate 10% per annum, which is allowed as per the deed. तो ये आपको एक error of omission given है क्वेश्चन के अंदर.
साइड बाय साइड आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स ड्रॉइंग्स गिवन है, P 5,000 पर मंथ, Q 15,000 पर क्वार्टर एंड R 30,000 रुपीज एनुअली, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसमें आपको बोला, क्वेश्चन सेम टाइप का लग रहा है आपको, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में बोला गया है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द लैप्स इन अकाउंटिंग। अब आपको जो ट्रीटमेंट देनी है, इट इज नोट बाय पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री और एन एडजस्टमेंट एंट्री। यू विल गिव द ट्रीटमेंट बाय पासिंग नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। और जब भी रिक्वायरमेंट में आपको बोला जाएगा गिव ट्रीटमेंट बाय पासिंग नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो इस केस में आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। इस केस में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के से। अब हमें मालूम है कि क्वेश्चन में आपको एरर गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को माइंड में रखना होगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिसमें से एक पॉइंट बार बार आ रहा है हमारे पास, और वो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स। नाउ बिकॉज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स आर गिवन and we are required interest on capital, that's why first of all we will calculate opening balance of capitals. In the solution, calculation of opening balance of capitals, closing balance हमें given है 2 lakh, 1,50,000 and 1,50,000. related हमें 2 information given है, drawings and net profit. हमें मालूम है क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते समय हम ड्रॉइंग्स को प्लस करते हैं, that's why add drawings. P की ड्रॉइंग्स है 5,000 पर मंथ, दैट मीन्स 60,000 रुपीज एनुअली। Q की ड्रॉइंग्स 15,000 पर क्वार्टर, दैट मीन्स 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 60,000 एनुअली। और R की आपको एनुअल ड्रॉइंग्स गिवन है 30,000 रुपीज। जब आप ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे द अमाउंट विल बी 2,60,000, 150 प्लस 60 210 एंड 1 लाख प्लस 30,000 1,30,000 रुपीज। गिवन प्रॉफिट्स को आपने माइनस करना है लेस डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया गया मींस द कंप्लीट प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट्स व्हाई 1,80,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द गिवन रेशियो 2:1. द अमाउंट विल बी 72,000, 72,000 एंड 36,000 रुपीज। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 1,80,000 को इन द गिवन रेशियो 2:1. अब जब आप ये माइनस करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट को, then whatever the balances will be, these are said to be the opening balance of capitals. 2,60,000 minus 72, 1,88,000, 2,10,000 minus 72, 1,38,000, 1,30,000 minus 36,000, 94,000. These are the opening balance of capitals. Now you will calculate interest on capital on these balances. अब जैसे अभी हमने शेयर किया है कि जब भी रिक्वायरमेंट होगी गिव एडजस्टमेंट एंट्रीज इन प्लेस ऑफ ए सिंगल जर्नल एंट्री, तो इस केस में हमें एंट्रीज देनी होंगी विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वे ऑफ ट्रीटमेंट आपको याद रखना होगा। इस तरह के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन प्रॉफिट्स को कैंसिल करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। कैंसिलेशन के लिए एंट्री पास की जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। कैंसिल करने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और हेल्प लेंगे एक न्यूली ओपन अकाउंट की, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दैट्स व्हाई दिस एंट्री विल बी पास्ड एंड दिस इज द एंट्री फॉर इनकरेक्ट प्रॉफिट कैंसल्ड। तो गिवन 1,80,000 रुपीज आप कैंसिल करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:1. इसके बाद आप जो आपको एरर गिवन है उसकी ट्रीटमेंट दिखाएंगे। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जनरल एंट्रीज ऑलरेडी की हुई है। हमें मालूम है इस केस में फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करने की होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फर्म, दैट्स व्हाई डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, हमें कैलकुलेशन करनी है ओपनिंग बैलेंसेस पर। नाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% on opening balance of capitals. It is 1,88,000, 1,38,000 and 94,000.
जब आप 10% कैलकुलेशन करेंगे इट विल बी 18,800, 13,800 एंड 9,400 रुपीज। ये हमने मेंशन किया हुआ है 18,800, 13,800 एंड 9,400, टोटल इंटरेस्ट 42,000। And finally, we will close this interest on capital account by transferring it to profit and loss adjustment account. अब क्योंकि डेबिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए आप इसे क्रेडिट करेंगे और ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। दैट्स वाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बाय ₹42,000। अगर और भी कोई इस तरह की एरर गिवन होगी तो आप उसकी पहले एंट्री दिखाएंगे और फाइनली उस एरर को भी क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नाउ अगेन सी द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड हियर बाय ₹1,80,000 एंड डेबिटेड हियर इज 42,000। तो क्रेडिट 1,80,000, डेबिट 42,000, फाइनल क्रेडिट बैलेंस इज 1,38,000। अब आप इस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे अगेन बाय ट्रांसफरिंग इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:2:1। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,38,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। The final amount will be 55,200, 55,200 and 27,600. So this is the way when the requirement is give treatment by passing necessary journal entries. Once again, इस केस में सबसे पहले आप गिवन प्रॉफिट को कैंसिल करेंगे by debiting it to partners capital account with the name of profit and loss adjustment account. ये वे आपको याद रखना होगा इस केस में। फिर आप जो आपको एरर दी हुई है उससे रिलेटेड एंट्री पास करेंगे, जो एरर है उसे क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर फाइनली आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का कितना बैलेंस है और कौन सा बैलेंस है। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ है, फिर डेबिट हुआ है, फाइनली इसका क्रेडिट बैलेंस है। फिर आप इस क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करेंगे बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और इसे ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको याद रखनी होगी क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन आपको गिवन है और सिंगल ही इलिस्ट्रेशन दी हुई है। तो ये वे आपको माइंड में रखना है कि अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है गिव ट्रीटमेंट बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज, देन दिस इज द ओनली वे फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन।